वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं चिंतामणि। आज के एक्सरसाइज हमारी 10.4 क्वेश्चन सेकंड। सो नाउ क्वेश्चन सेकंड, फाइंड a unit vector perpendicular to each of the vectors vector a plus b and vector a minus b, where vector a equal 3 unit vector I plus 2 unit vector j plus 2 unit vector k and vector b equal unit vector I plus 2 unit vector j minus 2 unit vector k. So now solution. Given vector a equal 3 unit vector I plus 2 unit vector j plus 2 unit vector k and vector b equal unit vector I plus 2 unit vector j minus 2 unit vector k. Now vector a plus vector b equal 4 unit vector I plus 4 unit vector j plus 0 unit vector k. Vector a minus vector b equal 2 unit vector I plus 0 unit vector j plus 4 unit vector k. Now vector a plus vector b cross vector a minus vector b equal, write in determinant form. So vector I, vector unit vector j, unit vector k. Direction ratio of vector a plus b 4 4 0 4 4 0. Vector a minus b 2 0 4 2 0 4. Equal unit vector I into solve determinant. This 4 4 is 16 minus 0 minus unit vector j. This 4 4 is 16 0 plus unit vector k. This 0 minus 8 equal 16 unit vector I minus 16 unit vector j minus 8 unit vector k. Now modulus of vector a plus b and a minus b equal under root 16 square plus minus 16 square plus minus 8 square equal under root 2 square into 8 square plus 2 square into 8 square plus 8 square
इक्वल 8 अंडर रूट 4 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल 8 इंटू अंडर रूट 9 इक्वल 8 इंटू 3 equal 24. Now required unit vector perpendicular to vector a plus b and vector a minus b is equal vector a plus b cross vector a minus b upon modulus of vector a plus b cross vector a minus b. Equal 16 unit vector I minus 16 unit vector j minus 8 unit vector k. This is plus minus. So plus minus upon 24 equal plus minus 2 upon 3 unit vector I minus plus 2 upon 3 unit vector j minus plus 1 upon 3 unit vector k. Now class over. वीडियो में लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से सजेस्ट कीजिए। अदर वीडियोज के एडिटेड चिंतामणि क्लासेस 585 की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। खुश रहिए। थैंक्स।